where the state is set to hold the high school leaving certificate or the HSLC examinations as well as the higher secondary examinations from today. A total of 431,132 students will be appearing for the HSLC and High Madrasa examination, which would be held in 903 centers across the state. Now, similarly, around 2,15,022 students will be appearing for the higher secondary examinations in 796 centers. Well, this is indeed another big story this morning we're tracking. Well, the state of Assam is all set to hold the High School Leaving Certificate or the HSLC examination as well as the higher secondary examinations from today. Now, a total of 431,132 students will be appearing for the HSLC and Higher Madrasa examinations, which would be held in 903 centers across the state. And similarly, around 2,15,022 students will be appearing for the higher secondary examinations in 796 centers. Joining me on the broadcast at the moment is my colleague Ripunjoy Das. Well, Ripunjoy, this is indeed a sigh of relief for the students out of the four walls and back to the classrooms. Yes, indeed, Aaron. It has been a very testing time for the last couple of years where the students were mostly put in indoors and they had this all set of online class. Not used to. This was completely a new, I would like to say, test for the students community across the globe, not only in Assam and India due to the COVID period. Now, after, yes, you have rightly mentioned a sigh of relief for the students. They are back to the normal routine. You can see students all enthusiastically pouring in, I would like to say, at the Dibrugarh Government Boys Higher Secondary School to appear for their HSLC exam, which is considered to be the first barrier of a student's, first important exam for a student's life. So, Aaron, if we are to speak about some of the figures, we have, as you said, 903 centers across the state of Assam. The metric examination is conducted by the SEBA board, that is the Secondary Education Board of Assam, and out of which there are total number of 4,31,132 students this year appearing for this HSLC and High Madrasa examinations, and of them they are actually distributed all throughout the state of Assam. In Dibrugarh, this particular center, this Government Boys Higher Secondary School Center, students from around 15 schools have come in. You can see students with different kind of uniforms, and they have come in to appear for their exams. And this is indeed a very significant step by the state government, since we have moved out of the COVID. And the government has also been stressing for the last few days that everything should run as normal, everything should function as normally. And so, hence this examination. One more important thing, Aaron, I would like to add is that all the students have been vaccinated. They have been vaccinated with COVID doses. Okay. And after that only they have been allowed to enter the examination hall here. And all the teachers and the officials who are on the job, who are monitoring the entire system, are also being vaccinated. So these precautions are still being taken, even if we have almost zero across the state, zero cases of COVID across the state of Assam. Aaron. Well, Ripunjoy, you would agree with me that, this is not the time still to be complacent and drop our guards. So where you are right now, talk to us a little bit about the protocol, social distancing that you see, wearing of masks and hand sanitizing.
Yes, Aaron, as we say that already we have zero cases of COVID in Assam for the last 1 or 3 to a few days. But still, the government is on guard, the authorities are on guard. People are being advised. As I said, that only vaccinated students are being allowed to appear for the exam. That is number one precaution. Number two is that they have been asked to wear masks. As you can see, all the students are wearing masks before they are entering the examination, respective examination hall. And also there are provisions kept for hand sanitization, and they are being carried out. That is being carried out. And earlier also, around for the last couple of days, these examination halls and in fact the toilets and bathrooms which are likely to be used by the students are all being sanitized, and that too several times, 2-3 times that sanitization process has gone through. Aaron would like to interact with Yes, please with go ahead. some teachers here Yes, please who go ahead. are with us. Sir, আজি ইয়াত কিমান জন পৰীক্ষা দিব, কেইটা চেণ্টাৰ? 784 জন 784 মেইনটেইন হৈছে, ধুনীয়াকৈ হৈছে। সিহঁতক মোবাইল সোমাবলৈ দিয়া নাই, প্লাছ ঘড়ী সোমাব দিয়া নাই, বাকীখিনি যিখিনি নিয়ম আৰু আমাৰ সেই নিয়মখিনি হেৰি কৰা হৈছে। চব ব্যৱস্থা আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে, ধুনীয়াকৈ ব্যৱস্থা আছে, চব কৰা আছে। হয়, আৰু বিশেষকৈ আজি 2 বছৰমানৰ মূৰত হৈছেতো, সেইকাৰণে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক খুব উৎসাহিত হোৱা দেখা গৈছে। তাৰমানে আপোনালোকো খুব ভাল লাগিছে, বহু দিনৰ মূৰত ভাল লাগিছে। হয়, অনলাইন ক্লাছটোত আচলতে এতিয়া ক'বলৈ গ'লে ক'বও নোৱাৰি, কিন্তু একচুৱেলি অফলাইনতে বেছি ভাল হয়, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে ভৱিষ্যতৰ ফিউচাৰৰ কাৰণে ভাল, সেইটো কাৰণে। Thank you. So, Aaron, as you say that the teachers, they're quite busy now in the maintenance, since the exam will about to start at 9 a.m. and they are just, the students are being thoroughly checked. That is another issue, Aaron. Yeah. They are being checked. They are not being allowed to carry any kind of mobile or technical gadgets and other issues, so that the exams can be conducted in a free, fair manner. Aaron, we have seen for the last few years there have been instances of questions paper being leaked of various examinations. So authorities want to make full proof that these kind of instances do not take place again, and this is what these measures are being taken, like checking a student thoroughly before they are getting the entry into the exam halls. Aaron. Well, exactly. All the authorities there on their feet, and it's always nice to see students back to school and not confined to their four walls. My colleague there, Ripunjoy Das, thank you for joining me this morning. Well, joining me live on the broadcast is my colleague Shushmita. Well, Shushmita, if you can hear me, you know, we just spoke to Ripunjoy Das a while ago, and the atmosphere there was very different. All students were excited to enter, and they were queuing up outside the gates for the examination. What is the scene like where you are? एरन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिसपुर गवर्नमेंट HS स्कूल में, जहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही नज़ारा हर जगह, जहाँ पर एक्साइटेड तो है छात्र, उसके साथ ही साथ टेंशन का भी माहौल है। एक सभी लोगों पर, अभिभावकों से लेकर परीक्षार्थियों तक एक मतलब अभी जो नर्वसनेस है उनके अंदर दिख रहा है। साथ ही साथ ये छात्र मैं दिखाना चाहूँगी जो अपने रूम के हिसाब से रूम नंबर देख के वो लोग अपने एग्ज़ाम हॉल के अंदर जा रहे हैं। आज पहला एग्ज़ाम है, मैं बता दूं आज इंग्लिश एग्ज़ाम है, उस हिसाब से बच्चे प्रिपेयर होकर आए हैं। मैं कई लोगों से पूछने की भी कोशिश करूंगी। एक्सक्यूज मी, কি কবা আজি ফার্স্ট এক্সাম দিবলৈ আহিছা, কেনেকুৱা ফিলিং হৈ আছে? বহুত ভয় লাগি আছে আৰু ফাৰ্ষ্ট দিম না, সেইকাৰণে বহুত ভয় লাগি আছে। আৰু তোমালোকৰ এটা ভালো
খবৰ আছে যে আগৰ পৰা সিলেবাস অকমান ৰিডিউস কৰা হৈছে হৈছে আৰু বহুতে নিউজতো কৈছে না 2021 পেপাৰ আহিব বুলি এতিয়া নাজানো আৰু পঢ়িছোঁ কিবা হয় অল দ্য বেষ্ট থেংক ইউ কি ক'বা ভাইটি তুমি এক্সাম দিবলৈ আহিছা কেনেকুৱা ফিলিং হৈ আছে কি ক'বা বহুত মানে নাৰ্ভাছ হৈছোঁ লিখিব পাৰিম নে নোৱাৰিম ঠিক নাই কিন্তু যোনখিনি পঢ়ি আহিছোঁ সেইখিনি গোটেই লিখিম আৰু ऑल द बेस्ट ঠিক और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं छात्राओं का टेंशन आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चों में इस वक्त मैं पूछना चाहूँगी आपसे कैसा महसूस कर रहे हैं एग्जाम देने जा रहे हैं महसूस तो अच्छा है लेकिन आज इतना जल्दी में आया अभी डर भी लग रहा है क्योंकि आज फास्ट एग्जाम है तो मैं कोशिश करूँगा मेरी तरफ से कि अच्छे से करूँ और सब प्रिपेयर करके आया हो तो आई विल डन माई बेस्ट थैंक यू वेलकम तो देख रहे हैं एक्साइटमेंट बच्चों में और साथ ही साथ अभी जो टाइम है वो बिल्कुल मतलब एग्ज़ाम हॉल में एंटर करने का टाइम है थोड़ी देर में पेपर शुरू होगा और इससे पहले जो है प्रेशर और भी बिल्डअप होता जा रहा है साथ ही साथ हम लोगों ने कई अभिभावकों से भी बातचीत किया उन्होंने भी बताया कि बच्चों के साथ साथ अभिभावकों का भी उतना ही टेंशन रहता है जितना बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपेयर होकर आते हैं उतना ही एग्ज़ाम प्रेशर अभिभावकों पर होता है और भी कई बच्चे मौजूद हैं मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगी एक्सक्यूज मी कैसा लग रहा है आपको कैसा महसूस कर रहे हैं आज पहला एग्जाम है बहुत दिनों बाद आप लोग ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हैं कैसा डर भी लग रहा है टेंशन भी हो रहा है वही ठीक है मेरा देर हो रहा है अभी जा रहा हूँ तो जैसा बच्चों ने बताया अभी फिलहाल एंटर करने का टाइम हो गया है थोड़ी देर में एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है तो उसी के लहजे से हमने आपको दिखाया कि बच्चों में कितना अभी प्रेशर है साथ ही साथ एग्ज़ाम देने के बाद पेपर देखने के बाद एक जो रहता है सटल माहौल हो जाता है बच्चों को थोड़ा अभी जो है एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत सालों बाद एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोग ऑफलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं हालांकि एक अच्छी बात यह भी है कि पिछले 2 सालों में जो है उनका सिलेबस 40% तक रिड्यूस किया गया है वो भी एक राहत की बात है बच्चों के लिए और साथ ही साथ कोई भी एग्ज़ाम हो बच्चों में टेंशन तो रहता ही है एरन Well, Shushmita, of course, an amalgamation of nerves and excitement there. It is a big day for the students, of course. But are you able to speak to the authorities? And in terms of protocols, I'll ask you the same question that I asked Ripun Joydas a while ago. In terms of protocols, your sanitation, your social distancing, and how students are going to be seated inside the classroom, how is that playing out? बिल्कुल एरन इस बारे में भी हम अथॉरिटीज़ जो है एग्ज़ाम्स जिन लोग अभी कंडक्ट करा रहे हैं उनका भी मैं दिखाना चाहूँगी अभी इस वक्त पूरा चेक करके जा रहे हैं কি ক'ব কেনেকুৱা প্ৰিপাৰেশ্যন প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা হৈছে ভালে চলি আছে বহুত সুন্দৰ চলি আছে চেক কৰিছোঁ আৰু এতিয়া সোমাব দিলোঁ আৰু পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষা দিব আৰু লাহে লাহে আৰু হ'ব ভাল হ'ব কৰোনা কালৰ কাৰণে কেনেকুৱা প্ৰিপাৰেশ্যন লোৱা হৈছে এই চেনিটেৰী ল'ব দিছোঁ আৰু মাস্ক ল'ব দিছোঁ সেইখিনিয়ে तो जैसा कि उन्होंने भी बताया और एरन बिल्कुल अभी थोड़ी ही देर में एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले यहाँ पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ चेक किया जा रहा है कि किसी तरह की जो कहते हैं बहुत सारे इसमें केसेस भी आते हैं ऐसे जिसमें कि मोबाइल चेक किया जाता है और साथ ही साथ जैमर्स भी लगाए जाते हैं कई सेंटर में और बिल्कुल इस वक्त एग्ज़ाम शुरू होने का वक्त हो चला है तो इसलिए अधिकारी भी कुछ ज़्यादा नहीं कह पा रहे हैं उन्होंने बताया जैसे कि सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है साथ ही साथ सभी लोगों को मास्क अनिवार्य है मास्क पहनना ज़रूरी होगा बच्चों के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग भी ज़रूरी है इतना ही उन्होंने कहा तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए इस वक्त बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं All right, my colleague there, Shushmita Datta, reporting from Dispur Government Higher Secondary School. Thank you for all your inputs.